ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। नरसिंहवपुरभीमं स्तम्भसम्भवमद्भुतं भक्तत्राणाय बिभ्राणं वासुदेवमुपास्महे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं और सप्तम स्कंद का प्रथम श्लोक। राजा जी पूछ रहे हैं, नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा के बारे में वर्णन आता है। तो पहले ही राजा जी पूछ रहे हैं, परीक्षित पूछ रहे हैं। राजोवाच समाप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधेद्विषमो यथा न यस्यार्थसुरगणे साक्षानि श्रेयसात्मना नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च गुणशयी इति नासु महाभागा नारायण गुणान् प्रति संशयासु महान् जात तद्भवान् चेतुमर्हति। श्रीशुक उवाच साधुपृष्ठं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यामर्षेभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम्। निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्नादमनो गुणा न तेषां युग्मपद्राजन् रासा उल्लासेव वा। जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भज। ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मत्थित्वा कवयोऽन्ततः यदा शुश्रेक्षुः पुरात्मनः परो रजा सृजते सप्रत्यगस्वमायया। सत्त्वं विचित्रासुरीरंसुरीश्वरः स एष्यमाणस्तमैर्यत्यसौ कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधानभूम्यां नरदेव सत्यगे ययेष राजन्नपि कालैषिता सत्तं सुरानीक्यमिवेधयत्यता
तत् प्रत्यनीकान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुस्रवाम् अत्रैवोदाहृता पूर्वामिति आशा सुरर्षिणां प्रीत्या महाक्रतो राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा माद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतो वासुदेवे भगवते सायुज्यं चेदि भूभुजा तत्रादीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतक्रतो पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां तृणवदादिदं वदामि तम् युधिष्ठिरोवाच अहो अत्युद्भुतं हि दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषा एतावेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजेस्तमसि पातिता दमघोषा सुता पापा आरभ्य कलभाषणा संवर्त्यामर्षि गोविन्द दन्तवक्त्रश्चतुर्मतिः सपतो राजकृद्विष्णुं यद्ब्रह्मा परमव्ययं श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्नं विवेशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवती दुर्वग्राहाधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना ब्रूमे तदद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणम् श्रीशुकवाच राज्ञस्तद्वच आकर्णं नारदो भगवान् ऋषि तुष्टप्राह तमाभाष्य शृण्वत्या तदसत्कथा नारद उवाच निन्दन्नस्तव सत्कारन्यकारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन्न विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यदा वैषम्यमे भूतानां ममामिति पार्थिवं यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वदात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मना परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनाश कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामिय न सदा भक्तियोगेन इति मे निश्चितमति कीटपेशकृतारुद्धा कुर्जयायां तमनुस्मरन् सर्वभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपदाम् एवं कृष्णे भगवते माया मनुजीश्वरे वैरेण पूतपापानास्तमापुरनुचिन्तया कामान्दवैषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मना आवेशात् तदगं हित्वा भवस्तद्गतिं गताः।
गोप्या कामान् भयांस्कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो निर्वां सम्बन्धाद् वृष्णया स्नेहा दिव्यं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि नवीन स्यात् पञ्चानां बुर्गम्रदे तस्मात् केनापि मायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृश्वश्रेयो वैषेद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डवा पार्षदप्रवरो विष्णुर्विप्रशापात्पदाच्युतौ युधिष्ठिरोवाच कीदृशः कश्यवाशापो हरिदासा विमर्दनाय श्रद्धेया इमा वादि हरेरेकान्तिनां भव देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धमेतद्दाख्यातुमर्हसि नारदवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णुलोकं यदिच्छ्रया सनन्दनादयो जग्मुचरन्तो भुवनत्रया पञ्चषड्ढायनार्भावा पूर्वेशामपि पूर्वजा दिग्वादः शिशून्मत्वा द्वास्तौ तान् प्रत्यषेधताम् अस्मन् गोपिता एवं युवां वासं न चारतः रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषा पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाज्वतः एवं शप्तो स्वभावनात् पतन्तो तौ तै कृपालुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्मभिर्भातृभिर्लोकाय कल्पतां जज्ञाते तौ दिते पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुरुज्येष्ठो हिरण्याक्षो नजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुरुर्हरिणः सिंहरूपिणः हिरण्याक्षो धनुर्धारे बिभ्रतः सौगरं बभु हिरण्यकशिपुपुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाजक्रोद्धन्तो मुद्यमैः ततस्तौ राक्षसो जातो केशिन्यां मिश्रवासुतौ रावणं कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेया मुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियो जातो मातृश्वस्नात्मजो तव अधुना शापनिर्मुक्ता कृष्णचक्रहतासो वैरानुबन्धदेव्रेण ध्यानेनाजुदसात्मतां नीतौ पुनर्हरे पार्श्वाय जगवतुर्विष्णुपार्षदौ युधिष्ठिरोवाच विद्वेषोदयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्नेन प्रह्लादस्याच्युतात्मना ब्रूहि मे भगवन्नेन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरित्रो नामो प्रह्लादचरितोपकर्मै प्रथमो पारायणादध्यायन्दो मम गामाः पुनाजन्दो मनोरथाः। अब दूसरा अध्याय आता है, उसमें
हिरण्याक्ष का बद्ध होने पर हिरण्यकश्यप का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना होता है। तो वो समझा रहे हैं किस प्रकार। नारद वाच, नारद जी ने कहा, भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यतप्त तप्यन्दृशा सुजा आह चेदं रुषा घूर्णः सन्दष्टः दशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरं करालदृष्टोग्रदृष्टया दुष्प्रेक्ष्या भ्रुकुटीमुखा शूलामुद्यस्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् भूभो दानव दैत्येया द्विमूर्धस्त्र्यक्षशम्बरा शतबाहो हयग्रीवा नमुचे पाक इल्वला विप्रचित्ते मम वचः वपुलोमन् सकुनादयां शृणुतानन्दरं सर्वे क्रियतामासो माचिरम् असपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहृत् पाष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः तस्य त्यक्तस्वभावस्य वनोकसं भजन्तं भज्यमानस्य बालस्यैव स्थिरात्मनः मच्छूला भिन्नग्रीवस्य भूरणा रुद्रेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्यै भ्रातरं मे गतव्यथा तस्मिन् कूटे हिते नस्ते कृतमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ते विष्णुप्राणा दिवोकसा तावद्याता भुवं यूयं विप्रक्षत्ता समेधितां सुयोदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याया व्रतदानिनां विष्णुरद्विजा क्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणं यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रियाः तं तं जनपदं याता सन्दीपयत वृक्षतः इति ते भर्तृनिर्देशामादाय शिरसा धृता तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रिया पुरग्रामा व्रजोद्याना क्षेत्रारामाश्रमाकरान् खेटखरवडघोषांश्च ददहुः पतनानि च केचिद्घनेत्रैर्विविधुः सेतुप्राकारगोपुरान् आजीव्यांश्चिन्दुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रदाहन् सरयान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखैः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवः प्रदित्यज्य भुवि चिरुरलक्षितः हिरण्यकशिपुर्भ्रातृः सम्परेतस्य दुःखितः कीर्ता कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रा न सान्त्वयत् सखमुनिं संवरं दृष्टं भूतसन्तापनं भृकं कालनामं महानामं हरिश्मश्रुमथोत्कचं तमान्तरं रुषा भानुं दिदि च जननीं गिरा सलक्षणया देशकालज्ञायैदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्ब हे वधूपुत्रा वीरं मारत्सूचितं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यासुराणां वद ईप्सितः भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुब्रते दैवेनैकत्र नीतानां
मुन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्य आत्मा व्यय शुद्धा सर्वगा सर्ववित्परः दत्ते सावात्मनो लिंगं मायाया वृजन् गुणान् यतां भजा प्रज्वलदा तरवोऽपि जला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भू एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्या विकलपुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव एषा आत्मा विपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना एषा प्रिया प्रिये योगो वियोगा कर्मसंसृते सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधा स्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेका स्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्ति मामितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधयेत् ऊषि नरेष्वभूद्राजाय सुयज्य इति विश्रुता सपत्नैर्नियतो युद्धे यस्तमुपासतः विशीर्णा रत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणसृजं पुरसरनिर्भिन्नहृदयं शयानमासृगाविलं प्रकीर्णकेशं दस्ताक्षं रभसा दक्षदं रजाकुण्ठामुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे उसी नरेन्द्रं विदिना यथाकृतं पतिं महिष्या प्रसमीक्ष दुःखिता हतास्मनयनाथीति करैरुरोविरं ग्रन्थ्यो मुहुस्तन्पदयोरुपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्ते यस्रै कुचकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणा शुचं नृणौ सृज्यन्ते आक्रन्दनया बिलेबिरे अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो दृग्गोचरं दशाम् उशीनराणामसि मृत्युतः पुरा कीर्तोऽधुनायेन शुचां विवर्धना त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विना श्याम सुहृतमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिशि यत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगुह्यामृतं मतिम् अनिच्छतीनां निर्हारामर्कोस्तं सन्न्यवर्तता तत्र प्रेतबन्धूनामाश्रित्य देवितम् आहतान् बालको भूत्वा यम स्वयमुपागता यम उवाच अहो अमीशां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहा यत्र गतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि सुचिन्त्य पार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभ्यक्षमाणा अबला बिर्गादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भि य इच्छेषः सृजति दमव्ययो न य एव रक्षत्यवमुलुम्बते च तस्या बला क्रीडनमाहुरीषितो ऋतुश्चराचरं निग्रहसंग्रहे प्रभो पतिच्युतं देष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहितं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे गुप्तो शाहतो
जीवति भूतानि तै निजयो निकर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वथा न तत्र ह्यात्मा न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यथोदके पार्थिवतैजसर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलोदारुजभिन्नय्यते यथा नीलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रया परा सुयज्ञो नन्मयं सेते मूढा यमनो शोचतः या श्रोतायो नुवक्तेः सा न दृश्यते करिजद न श्रोता नानुवक्तायां मुख्योऽप्यत्र महानसो यस्त्वेन्द्रियवानात्मा स चाशिन्या प्राणदेहयो भूतेन्द्रिया मनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभो भजत्यो सृजते ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावलिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्माणि बन्धनं ततो विपर्यया क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते वित्तता विनिवेशोऽयं यद् गुणेष्वर्थदिग्वजः यथा मनोरथा स्वप्न सर्वमेन्द्रियगं अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ते तद्विदा नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति लुब्धको विपने कश्चित् पक्षिणां निर्मतोऽन्तकः वितत्या जालं विदधे तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदर्श्यता तयो कुलिङ्गे सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता ये कुलिङ्गस्तां तथा पन्नां निरीक्षा वृषदुःख्यता स्नेहादकल्पः कृपणां पर्यदेवयत् अहो अकरुणो देवा स्त्रिया करुणया विभो कृपणं मानसोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखमनेन विदुरायुषा कथं त्वजात् पक्षांस्तान् मातृहीनान् विवर्म्यम् मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा एवं कुलिङ्गं विलपन्तमहाराज प्रिया वियोगास्तुरमश्रुकण्ठं स एव तं सा कुनिकः सरेण विव्याधकालप्रयतो विलीना एवं अयोयामपश्यन्त्य आत्मा पायमबुद्धया नयनं प्राप्स्यतः शोचन्त्यः पतिं वर्षा सतेरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बालैवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसा ज्ञातयो मे निरहे सर्वमनित्या मया तोत्थितं यमयैतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयता ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्पासाम्परायिकं ततः शोचत मायूयं परं चात्मानमेव च क आत्मा क परो वात्रा स्वीया पारैक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनां नारद उवाच इति दैत्यापतेर्वाक्यं दिदिराकर्ण्यशुश्रूषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्ते चित्तमधारयत्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां सप्तमस्कन्धे द्वितीयः शोका
पानायनं नामो द्वितीयो उत्सवा सत्या संतो मम कामा पूर्णा संत मनोरथा। धर्म की जय व धर्म का नाश व प्राणी में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की रक्षा, जयकारा शेरवाली का पूर्ण सांची दरबार की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।